everyone. My name is Zaid Akhtar from Electronics Engineering third year, also a joint coordinator at AMURoboclub. So today's topic is pretty new to everyone, I guess. So this is bare metal programming with Arduino. Okay, so let's move to the purpose of this class. Fine. तो पहला पर्पज ये है हमारा कि हमें आर्डिनो जो हमारे कामों को आसान करता है, प्रोग्रामिंग को आसान करता है, वो हमें अब सिखाया कि किस तरह से आर्डिनो मतलब एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देता है and it hides all the scary stuff so that you can learn the basics of microcontroller. Okay, I mean अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है आर्डिनो पे, राइट, बेसिक प्रोजेक्ट करना है, अगर तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये जानना ज़रूरी नहीं होगा कि बूट लोडर क्या होता है, या फिर टाइमर की फ्रीक्वेंसी हम रजिस्टर लेवल पे जाकर के कैसे चेंज करेंगे। तो पहला पर्पस ये होगा कि वी विल लर्न टू अप्रिशिएट आर्डिनो, राइट, हाउ इट मेक्स a very user-friendly platform for beginners. The second objective is that we will learn other microcontrollers as well after and onwards this class. Since सारा इंडस्ट्री का काम आर्डिनो पे नहीं होता, बल्कि बाकी माइक्रो कंट्रोलर्स भी हैं। सपोज STM32 हो गया या MSP430, और एक माइक्रो कंट्रोलर्स हैं हमारे पास। सो बाकी माइक्रो कंट्रोलर्स सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर पे हो तो आप डेफिनेटली एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना चाहोगे, राइट? तो लेट अस सी कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एज एन एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर आपके पास क्या क्या है, राइट? सो वी विल गो टू रीड एंड सर्च फॉर व्हाट आर द रूल्स एज एन एम्बेडेड इंटर्न. So there are lots of opportunities for an embedded software intern, okay, which you can grab easily in your second year as well as in first year. But the basic requirement is that you have to understand and how actually a microcontroller works. Simply अगर आप डिजिटल रीड कर रहे हो आर्डिनो पे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है, क्योंकि माइक्रोकंट्रोलर्स में क्या होता है कि उसकी मेमोरी साइज काफ़ी लिमिटेड होती है, इन टर्म्स ऑफ किलोबाइट्स होती है, तो आपको काफ़ी इफिशिएंट कोडिंग करनी पड़ती है, इसलिए हमें बेयर मेटल प्रोग्रामिंग ज़रूरी होता है हमें सीखना. दैट इज द बेसिक ऑफ माइक्रोकंट्रोलर. ऑलराइट, let's move on. So I have a basic question for you all, starting from the very basics. What is Arduino? We have here 5 options from A to E. So please comment in the chat box. What do you think? What is Arduino? What Arduino is actually? We're waiting for your answers. Okay, Najmu says microcontroller. Anyone else? Okay, microcontroller. All right. Okay. Mm-hmm. So I think most of you have picked that Arduino is a microcontroller, right? But no, the Arduino board that uses the microcontroller is at Mega 328P. All right. तो अगर आपको Arduino दिखे कहीं पे, तो let's see what Arduino is. Okay, I will show you later. So is it a programming language? No, still no. The programming language is C++. जो आप Arduino IDE पे जो कोड करते हो वो C++ में कोडिंग होती है उसमें, वो Arduino स्पेसिफिक लैंग्वेज होता नहीं है, राइट? Bootloader? No. The bootloader for Arduino is OptiBoot. Compiler? Still no, because it is AVR GCC.
आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सी की लैब की होगी, उसमें जीसीसी कंपाइलर होता है सी के लिए, राइट? यहाँ पे आर्डिनो के लिए होता है एवीआर जीसीसी। तो नो अब्दुल, इट्स नॉट अ माइक्रोप्रोसेसर एज वेल। तो इज इट अ फ्रेमवर्क? यस। बेसिकली आर्डिनो क्या है कि एक कंप्लीट पैकेज है, फ्रॉम इट्स माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड टू इट्स आईडी टू इट्स कम्युनिटी। ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है एक बिगिनर को, कि हम उससे स्टार्ट कर सके, राइट? तो जो लोग माइक्रोकंट्रोलर कह रहते हैं, एक्चुअली माइक्रोकंट्रोलर कहाँ पे रहता है उसका भी बता देते हैं। तो कैन यू फॉलो माय कर्सर? This is the microcontroller. This is actually 8 mega 328p. This whole board is called Arduino Uno board, but the microcontroller is 8 mega 328p. Right. So saying that Arduino is a microcontroller is completely wrong. So next time, if anyone asks that what is Arduino, so you already know the answer. Fine. So let's move on to our main topic of the class. What is bare metal programming? Or bare metal programming is also known as register level programming, right? See what is bare metal programming. You can simply Google it and you will get the answer. The very first line describes what is bare metal programming. I will read for you. Bare metal programming is a term for programming that operates without various layers of abstraction. समझ में आया? Yes, no? और अब एक बढ़िया सा illustration दिया हुआ है. So let's see. Same answer here. Bare metal programming is writing firmware which directly runs on the hardware without having any underlying abstraction, such as operating systems. See, आर्डिनो है क्या एक्चुअली? ठीक है, माइक्रोकंट्रोलर उसमें जो रहता है, तो वो एक्चुअली ये रहता है उसमें माइक्रोकंट्रोलर इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, राइट? वो हार्डवेयर है। उस पे हम लोग जो आर्डिनो आईडी पे जो कोड लिखते हैं, सपोज ब्लिंकिंग एलईडी का एक कोड रहेगा, तो वो ब्लिंकिंग एलईडी से उस माइक्रोकंट्रोलर के सर्किट्स में इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो उसके लिए बहुत सारे एब्स्ट्रैक्शन चाहिए होते हैं, लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन चाहिए होते हैं। हमारा जो प्रोग्राम रहता है, ब्लिंकिंग एलईडी का सिंपल प्रोग्राम रहेगा। सपोज आप लोग जो टिपिकल प्रोग्राम लिखते हो, ब्लिंकिंग एलईडी का पिन मोड सेट करके, डिजिटल राइट सेट करके, हाई करके, लो करके, तो वो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, राइट? वो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है वो ओएस हैंडल करता है उसे। देन ओएस ड्राइवर्स को हैंडल करता है, ताकि ड्राइवर जो रहे वो कंपाइल्ड कोड को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली 2 to 3 एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स होते हैं। की वजह से काफ़ी जो प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। वहीं बेयर मेटल में क्या होता है कि आपका एब्स्ट्रैक्शन जो एप्लीकेशन प्रोग्राम रहता है वो तो रहता ही है, थोड़ा अलग रहता है वो पहले वाले प्रोग्राम से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, राइट? और बस वो उसे हैंडल करने के लिए हार्डवेयर लाइब्रेरी होती है और वो सीधे फिर हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट होता है। तो यू कैन सी दैट एटमॉस जो यहाँ पे रहता है, जो 2 लेयर्स के एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे रहेंगे। 2 लेयर्स के एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा नहीं यहाँ पे। So this is comparatively efficient and faster. Efficient in terms of space, memory space, right? और ये faster भी है from the conventional code, which is more readable. Okay, दोनों के pros and cons है। इसका advantage ये है कि ज़्यादा readable है, ज़्यादा portable है, और इसका advantage ये है कि ये ज़्यादा efficient है, right? तो एक चीज़ ये आती है कि bare metal programming आप किसी हार्डवेयर, स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिख रहे हो। सपोज आप आर्डिनो उनो के लिए कोड लिख रहे हो, राइट? तो आर्डिनो उनो की कोड आप जब लिखोगे bare metal में, तो वो आर्डिनो लियोनार्डो पे काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके रजिस्टर्स, उसके स्पेसिफिकेशंस, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन अलग होंगे। तो आपको ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू टिपिकल प्रोग्रामिंग, टिपिकल एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो आपको मैक्स टू मैक्स पिन नंबर सी चेंज करने पड़ेंगे और कुछ नहीं, राइट? बट इंडस्ट्रीज में हमें चाहिए होता है एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए होते हैं, ताकि एफिशिएंटली हमारे जो मेमोरी रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूज हो सके। दैट्स व्हाई वी प्रेफर bare metal एज अ प्रोफेशनल स्किल, राइट? आप बिगिनर हो तो आप
वो जो आप करते आ रहे हो वो करो, कोई इशू नहीं है। बट if you want to gain internship or make a career in embedded development, then certainly go. You have to start with bare metal. Move on. तो क्या, तो अभी जैसे बताया कि हार्डवेयर की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, तो हार्डवेयर की नॉलेज आपको अच्छी कहाँ से मिल पाएगी? आपके पास Arduino Uno का बोर्ड है, बट उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, तो उन सब के लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन, एक मैनुअल चाहिए होगा, राइट? उस मैनुअल का कहते हैं हम डेटा शीट्स, राइट? तो यहाँ पे दो डेटा शीट्स के लिंक गिवन है, आई विल शेयर विथ यू इन द चैट बॉक्स। SWLib is a hardware library. We will see what is it. Second link is this one. So you can open it and you'll see that it is, I think, more than 500 pages PDF. So I have already downloaded them. You can have a look at it. As you can see, it is 662 pages long PDF, and you don't have to worry about it now. That don't be scared. Okay. तो आपको बस इनमें से बस इस पूरी डेटाशीट में बस वही सेक्शंस को आपको पढ़ना है जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। सपोज आप चाहते हो कि आर्डिनो यूनो के बारे में आप मेमोरीज के बारे में जानो उसके, ठीक है? तो यू कैन सर्टेनली गो इनटू द कंटेंट सेक्शन एंड गो टू AVR memories. Click on it, and okay, let me go to the next video. That is more concise. Yeah, AVR memories. So does anyone know कि फ्लैश मेमोरी जो होती है आर्डिनो, ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है। फ्लैश दो दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक तो होता है फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी, आई मीन प्रोग्राम मेमोरी या फ्लैश मेमोरी कहते हैं, और दूसरा होता है डेटा मेमोरी, राइट? तो प्रोग्राम मेमोरी इज बेसिकली आपका जो इंस्ट्रक्शंस, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो स्टोर होंगे वो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होगा, और जो वोलेटाइल मेमोरीज, आई मीन वोलेटाइल वेरिएबल्स या वेरिएबल आप जो डिक्लेयर करोगे वो डेटा डेटा मेमोरी जाके स्टोर होता है। ओके, तो फ्लैश मेमोरी की साइज होती है जो 8 मेगा 328 पी, दैट द माइक्रो कंट्रोलर दैट इज इन आर्डिनो, वो 32 किलोबाइट्स होती है, राइट? इट इज इन किलोबाइट्स। सो आपका प्रोग्राम कोई अगर 32 किलोबाइट्स से ज़्यादा एक्सीड करता है, तो दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय आर्डिनो। ओके, सो इसलिए आपके पास काफ़ी कंस्ट्रेंट है, राइट? ये 32 किलोबाइट्स की मेमोरी में हमें प्रोग्राम करनी है, तो काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग एक एफिशिएंट प्रोग्राम डेवलप कर पाएँ, राइट? So this is our flash memory. The diagram you can see as well. This part is boot flash section. बेसिकली जो बूट लोडर होता है यहाँ पे वो पहले डाउनलोड होता है, ओके, और ये फिर यहाँ से ही ये एग्जीक्यूट होता है। बूट लोडर क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम होता है। जब भी आप आर्डिनो को रिस्टार्ट करो या अधिक प्रोग्राम करो, तो पहले सबसे पहले बूट लोडर ही रन होता है। दैट कॉन्फ़िगर्स द रजिस्टर्स, द मेमोरीज और द टाइमर्स एंड कंट्रोलर्स, वो पहले कॉन्फ़िगर कर लेता है। जस्ट एज़ आप सिस्टम अपने लैपटॉप या पीसी को आप ये करते हो, बूटिंग करते हो, तो सबसे पहले एक बूट ऑपरेशन चलता है, वैसे ही यहाँ पे बूट लोडर होता है माइक्रो कंट्रोलर्स में, राइट? So this is our program memory, and the next is our data memory. So we will take an in-depth look at our data memory. So it contains two sections, right? The first section can you can see these are registers, and the second section is internal SRAM. Suppose you define a variable int a is equals to 20 in a program, right? Then that variable will be stored in this bit, that variable will be stored in this part of the memory.
Okay, it will space will be created and it will be named as A, and it will be assigned an address which will be in between 0x0110 and 0x08ff. Fine. So it can have an address like 0x0200. Okay. So these are in hexadecimal values. These are hexadecimal values, not in decimal, right? So, and what are these registers? So that is our main concern here. So as you can see here, a register is a space or a place in RAM, and that is your volatile memory. Okay, data memory is also the RAM. Okay, program memory is ROM and data memory is RAM. So a register is a space in RAM that has a special purpose for the microcontroller. The internal SRAM that you were seeing previously, some uh, it is something sometimes called a general purpose memory. Okay, so because you can store any kind of data, any kind of variable in here, but registers में आपको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा ही आप स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर्स होते हैं वो स्पेशल पर्पस होते हैं। स्पेशल पर्पस उनका क्या हो सकता है? वो हमारे टाइमर्स और क्लॉक्स के फ्रीक्वेंसी को सेट करने में यूज हो सकते हैं। एडीसी को कॉन्फ़िगर करने में यूज हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करने में यूज हो सकते हैं। ठीक है। सो सपोज आई हैव a register named as port D. Okay, so this is an 8-bit register. So acha, any cases, acha, I want to tell you something, that all the registers in the wait a minute, all the registers in the Arduino, I mean all the registers in the 8 mega 328 are of 8 bits. So any guesses why are they 8 bits, not 16 bits? That's because at Mega 328P is an 8-bit microcontroller, right? So it has all the registers which are of 8 bits. So हर एक में 8 bits हैं, I mean registers में 8 bits हैं, right? So you can either read from a register or you can write into a register. So अगर यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 0 1 लिखा हुआ है, तो सडनली हम लोगों ने इस पार्ट ऑफ मेमोरी पे, इस पार्ट ऑफ रजिस्टर पे हम लोगों ने ये डेटा लिखा ही होगा खुद से, राइट? तो port D is very frequently used register. In some Just wait for a minute and you will get to know what is its use. First of all, let me show you the pins configuration. Okay. So as you can see, this is our Arduino Uno board, and if you write to the these values to the register, then it is equivalent to writing these commands. So if you are writing 1 to the 0th position, the indexing starts from 0. Okay, so it starts from 0 and all the way to up to 7. So if you are writing 1 to the 0th position of port D register, then it means that the 0 pin is set to high. And if you are writing a 0 to the first position, that means that you are writing pin number 1 a low. So let me show you what is. This is our pin diagram of Arduino board, right? So we have port D here. You can see it is written PD7, PD6, and up to PD0. So PD0 means port D pin 0. So these are of port D registers. These are port B registers. Okay, PV6 and all that. And here it is written PC. I mean port C. It's registers. Okay. So I will share this schematic in the WhatsApp group. Share it. I think you might have received that. Right. Let's move on. Why have I selected 4D register? You will get to know in a bit.
I will discuss in a much greater detail when I come to programming. Next is our bitwise operations. So bitwise operations is a much needed thing if you are doing bare metal programming. Right? So there are six operators. First is AND operator, OR operator, NOT operator, XOR operator, right shift operator, and left shift operator. Right. So suppose you have defined two variables as integer types, and a as 10 and b as 12. Right. So what will be the binary equivalent of a? I mean, what will be the binary equivalent of 10? Anyone? How will you represent 10 as a binary number? Correct, Nandini? It is 1, 0, 1, 0. Similarly, if you're going to write 12, we'll write it as 1, 1, 0, 0. So let's perform AND operation or operations, all these operations through programming. By this time, you might be familiar with Tinkercad environment already. There is already have been two classes for the circuits. We firstly create a variable t that will store answers and put c is equals to a and b. We will then print the value of c. Okay. So all these things we are doing in the setup part of the program, or not, we are leaving the loop part empty, so that doesn't make any issues. So let's see the serial monitor. What? Okay. Any guesses? What will be the value of 10 and 12? So this is basically an AND operation. So if you are adding it in binary, then that will result in e is equals to. So firstly, the corresponding bits will be ANDed, right? 1 and 1 will be 1, 0 and 1 will be 0, 1 and 0 will be 0, and 0 and 0 will be 0. So this 1000 is basically 8 in in decimal, right? So let's see that the our answer would be same like this. You can see it, or should I zoom? It is visible, right? So what if I OR it? If we perform OR operation in here, what will be our answer? I'm looking forward to chat box if anyone can answer it. Definitely, it will be 1110, and its decimal equivalent will be. Let's look into the program and see. 14. Right. Similarly, if we XOR it,
will give us, I guess, 6. So let me demonstrate it how it works. The XOR operation. So one XOR of 1 will be 0, 0 and 1. So if two bits are different, then we will get a 1. Okay. If the two bits are same, then we will get a 0. 1, 1, 0. That is it. So in decimal format, it will be 6. Okay. So if I'd be needing only the answer, then we don't want to use if we don't want to use the third variable, then we can remove it and we will store the value in A itself, right? So what will it do? So it is known as shorthand operator, right? So A and B will be XORed and the answer will be stored in A. Fine. So we will get the same result. Okay. Now, what if I say I will put a not operator in B? What will be my answer? So remember, B was in binary 1100. What will be B? Not of B must be 0011, fine, which in decimal will be 3. What we get? Okay, so can you say it? We are getting minus 13, not 3. So why is it so? Because we have defined B and A as integer data type, and integer data type takes 2 bytes of memory. Okay, 2 bytes. That means 16 bits. So B is represented as 00000. This is how actually B is implemented in while compiling. So if we are adding it, then all these zeros, all these zeros will be turned into one. 1, 2, 3, 4. And why are we getting a negative number in here? Here, we are getting minus 13. So because the most significant bit in here is the sign bit. Okay, the sign bit. If the sign bit is 0, then that means it is a positive number. If the sign bit is 1, that means it is a negative number. Okay, so it is basically, it is a 2's complement. It is in 2's complement. Okay. So if you convert 2's complement binary into decimals, it will give you minus 13. That's why we got not of B as minus 13, not 3. Right. So let's move on. काफी बातें हो गई, अब सीधे कोड पे आते हैं. So yeah, so my objective is to blink an LED with 2's time period and 50% duty cycle. Okay. So the pin number 13 is actually connected to the inbuilt LED of the Arduino board. Okay. So I want that this LED should be on for 1 second and should be off for 1 second, and it should repeat them. Okay. So my objective is here simple. LED with 2 seconds time period and 50% duty cycle. So I want to blink it. So could you please help me complete the code? What should come here? I'm setting pin mode 13 as
output or input. Fine. Output. Okay. Then I will write a high to what here? What should come here? 13. Pin number 13. And if I want to put off the LED, what should I add here? Select a blue. We will write a low here. And what will be the amount of delay that we will get finally? We want the LED to be off for a second. 1000. So because delay takes input in milliseconds, so we take 1000. We give 1000 milliseconds as 1 second. So okay, so you can also just for information, you can also write in place of I as 1. This will also work. So if you can similarly, if you can write 0 in place of I. So let us copy this code, online simulator. So this is our LED, and it should toggle for every toggle in every 1 second. So could you see? So let us also compile it up here. So let us also compile it in here in our Arduino IDE. Let's see how much memory does it take. Okay, how much memory does it use? Okay, it takes about 924 bytes of program memory. So let us keep track of it. Okay. Right, first it was 924 bytes of memory. Fine. Now we will use the concepts of bare metal programming and data sheet to optimize further. Okay. तो एज अ सेट की डेटा शीट में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो जो आपके काम की है वो वही पढ़ना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग इनपुट आउटपुट्स को ही हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राइट। हमारा मेन फोकस इनपुट आउटपुट कोड है, नथिंग एल्स। हमें अभी टाइमर से ये मतलब नहीं है ना, हमें यूआरट ये पिन को कॉन्फ़िगर करना है, ना हमें I2C प्रोटोकॉल्स यूज करना है, ना हमें इंटरप्ट यूज करना है। हमें यूआरट पोर्ट्स जानना है, ठीक है। यहाँ सेक्शंस हमारे यूआरट पोर्ट्स के, क्लिक ऑन इट। तो जो काम का रहेगा वो आई विल व्हाट इज इट, वेयर इट इज, देखो 3 input output memory address locations are allocated for each port, right? So for each pins आपको तीन या दो रजिस्टर्स को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। One is for data register, port X, data direction register that determines whether the pin is input or output, and the final one is port input pins. Okay. So one by one we will see what are these functions. So हमें अभी तीन ये मिले, क्लूज मिले हैं। एक तो पोर्ट एक्स रजिस्टर होता है, एक DDR-X रजिस्टर है, एक पिन एक्स रजिस्टर है। आर दे हाउ टू यूज दैट? Okay, so the DDR-X register selects the direction of this pin. So we wanted our pin to be output, right? तो अगर हम DDR-X पे DDR-X, okay, X represents the port name. If you want to configure the port B of pins, then we will write here DDR-B. If you want to configure port A,
यहाँ पे अगर देखो, अगर पोर्ट बी का हम लोग देखना चाहें तो वी विल राइट DDRB in place of X. For port C we will write DDRC, and for port D we will write DDRD. The subscript X is replaced by the port name. That's it. तो अगर हम आउटपुट रखना चाहें अगर अपने पोर्ट को, तो हम लोग DDRX पिन पे 1 लिखेंगे, ठीक? अगर इनपुट लिखना चाहें तो वो जो हमारा रहेगा हम 0 प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इज पोर्ट, हम पहला हम करते थे कि आउटपुट या इनपुट डिसाइड करते थे, राइट? तो वो चीज़ हम कर रहे हैं DDR पिन से। इस चीज़ की हम लोग अभी पोर्ट्स को फिर हम लोग हाई या लो दे रहे थे, राइट? तो यहाँ पे जो पोर्ट डी रजिस्टर था, फिर हम यही काम कर रहे थे। तो इट्स गो वन बाय वन स्टेप, ओके? तो वी नो दैट कि अगर पोर्ट डी रजिस्टर है और हमें हाई देना है तो हम लोग सिंपली 1 राइट करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन पे, पिन पोजीशन पे, वरना 0 पुट करेंगे, right? तो अभी हमारा मेन फोकस है पोर्ट बी रजिस्टर। Would be register pin number is 13, okay, D13. Port is B, pin is 6. So what will be the sequence of our binary value? Okay, so to configure port 6 of, we know that the there are 8 bits in that port, right? In port B. Let me show you. Let me show you once. Page number 100. Here's it. Port B यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है? वी वांट कि यहाँ पे इस पोजीशन पे 1 आए, ओके? तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 0 0। तो इफ आई राइट पोर्ट बी, अब अगर हम पोर्ट बी में ये डालना चाहें 0 1 0 0 0 0, तो व्हाट विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ इट? द डेसिमल इक्विवेलेंट विल बी 32. If we write port B as 32, then that will do as 32. And then we want uh, the sixth bit to be 0 to turn it off, right? Will give a 0 anyway. तो अगर हमें डिफरेंस देखना ही है तो इस डिले को हम थोड़ा कम कर देंगे, ताकि नए कोड और पुराने कोड में कुछ डिफरेंस दिख सके हमें। तो इनको start simulation and see if it works or not. As you can see, यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो रही है विद मच फास्टर रेट, क्योंकि हम लोगों ने डिले जो है 0.1 सेकंड दे रखा है। That is one of our an optimization that we did right now, right? So if we compile it now, so let's see how much data, how much memory size does it take. So this time it took around 754 bytes per second attempt. Right. All right. Then हम लोग ने ये भी देखा था कि अगर हम DDR-B रजिस्टर को अगर हम लोग 1 सेट कर दें, DDR-B रजिस्टर अगर हमारा है, फिर हम लोग सिक्स बिट को अगर 1 सेट कर दें, 6 बिट आई मीन 0 1 0 0 2 0 0,
that is same as 32. So let us get 32 here. And now if we compile it, our sketch used this amount of memory. Right? तो एज यू कैन सी हमारा कोड जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते जा रहा है। पहले 924 बाइट्स थे, अब 644 बाइट्स यूज़ हो रहे हैं हमारे मेमोरी के। हमारे पास टोटल इन ऑल 32 किलो बाइट्स मेमोरी हमारे पास अवेलेबल है, फ्लैश मेमोरी। और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी, अच्छा एक चीज़ था यहाँ पे, go back to our slide. I told you कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आर्डिनो में यूज होती है वो होती है सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसके बिना कोड लिखा नहीं जा सकता, वो है मेन फंक्शन टाइप। बट यहाँ पे आर्डिनो कोड में तो हमारा कहीं पे मेन फंक्शन यूज हो नहीं रहा है। तो हाउ इज इट वर्किंग? If you will go to its source code, Arduino source code, and search for, I guess, Arduino for AVR, you will get a GitHub repository. Let me show you what is it. This repository contains the source code and configuration files for a Arduino AVR boards platform. Okay, जो भी backend programming है वो इस GitHub repository. So if you look at I think for Arduino, and then some main. तो ये चीज है कि यहाँ पे सेटअप और लूप फंक्शन जो है, सेटअप और लूप फंक्शन जो ऑलरेडी मेन के अंदर डिफाइंड है। सेटअप एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है और लूप जो है एक इनफाइनाइट फॉर लूप के अंदर रिटर्न है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग जरूरी नहीं है कि सेटअप और लूप फंक्शन हम लोग लिखिए लेके, कैन यूज मेन फंक्शन एज वेल इन आवर आर्डिनो कोड। लेट्स गो फॉर इट। comment them out, right, our main function. And our first task was to set the pin number 13 as output, like TDRB as 32 bits, 32, sorry. And then we will make an infinite loop using while loop, while true. And true, we will put these instructions in here. Okay. Let's see if it works. Fine. Okay. So it got compiled, but let me see if it will be. I I don't think it will run because
No, the LED, our LED is not blinking anymore. The reason is that कि आप comparison तो हो गया, but upload करोगे तो वहाँ पे आपको error आएगा. Because the delay function uses timers. Right? Timers को initialize करने के लिए यहाँ पे जो additional functions given थे repository में, वो थे init function और init variant. तो ये actually ये हमें हमारे जो functions को, हमारे delay function को ये काम कर, इसके बिना delay function काम नहीं करेगा हमारा, क्योंकि delay function uses timers, controllers, timers and controllers, right? So we need to include them as well. We also need to paste this time also, where init variant is being defined. Time the code will run. Let's give a delay of 1 second again. Yeah, there you go. Our LED started blinking because with 1 millisecond, 1 second delay. Okay? That was what was missing to the code. So let us compile it and see how much data does it take, how much memory does it take. So yeah, 632 bits bytes. So as you can see, we have come a long way from where we started. हम लोगों ने बिल्कुल डिजिटल राइट डिजिटल और पिन मोड जो था उसे हटा दिया, फिर हमने वॉइड लूप और वर्ड सेटअप भी हटा दिया. देन वी आर नाउ इनटू मेन फंक्शन. फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें अब डिले फंक्शन को हटाना पड़ेगा, इनबिल्ट रहता है. So if you want to give some delay, we can write as for find a variable I, and I is equals to 0, I less than 1,000, 90,000. We will replace it. So what will it do here? कि पहले पोर्ट B32 मतलब पहले डिजिटल राइट हाई होगा पिन नंबर 6 पे, यानी D13 पे, और 9,000 तक ये आई मीन ये लूप चलते रहेगा. ठीक है, आपको जब तक ये आई की वैल्यू 9,000 ना पहुंच जाए, फिर पोर्ट बी को जीरो करेगा, फिर 9,000 तक इसकी वैल्यू चलती रहेगी. राइट. तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट. फर्स्ट. सो या इट वर्क. ओके. सो वन मोर थिंग, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप आर्डिनो आईडी पे अगर कोड एग्जीक्यूट करोगे, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या देखेगा कि यहाँ पे फोर लूप चल रहा है, बट वो फोर लूप से कुछ फायदा हो नहीं रहा है. ठीक है, तो कंपाइलर इसे कभी कभी इग्नोर कर देगा. ओके, कभी कभी नहीं, मतलब इसे इग्नोर ही कर देता है, वो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनता है कंपाइलर. तो वी नीड टू आउट स्मार्ट द कंपाइलर एज वेल.
आप सिंपली यहाँ पे दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हो उस वेरिएबल को, that the compiler doesn't ignore these for loops, and we will get a perfect delay. Now let's compile and see how much memory does that take finally. A considerable amount of memory is being saved now. So in our final code, it is now of 478 bits bytes. So where we started from 924 bytes, we see how much savings we will get. Uh, so the final 478, okay. 478 on 924. So we saved. Now our code has shrunk by almost 50%. Right. So this is how bare metal programming is efficient. I mean, we are doing the same thing, right? We are doing the same thing, but the code uses much less space. It's much faster now. तो अभी ये क्या है कि यहाँ पे डिले जो है 9,000 तक तो जा रहा है, 90,000 तक भी जा रहा है आई की वैल्यू, बट डिले जो है वो हमारा बिल्कुल इट्स नॉट गिविंग एन एक्यूरेट डिले ऑफ 1 सेकेंड और 9 सेकेंड है, बिकॉज हमें नहीं पता कि किस रेट पे एग्जीक्यूशन हो रहा है इस इंस्ट्रक्शन का। तो हमें टू गेट अ परफेक्ट डिले फिर हमें काउंटर्स टाइमर्स का यूज करना पड़ेगा, फिर वो इंटरप्ट इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पे। तो एज ऑफ नाउ दिस इज बियॉन्ड टुडेज क्लास। तो अगर आपको किसी को डाउट होगा कि हाउ कैन वी यूज इट, सो यू कैन definitely DM me, right, for any query. So that was our final code. I guess आप लोग को इंट्रो मिला होगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज बियॉन्ड डिजिटल राइट एंड पिन मोड। वी आर डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग द रजिस्टर्स, जो हमारे बोर्ड में रजिस्टर्स होते हैं डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहे हैं जो माइक्रो कंट्रोलर वाले रजिस्टर। तो फॉर एंडिंग, एनी डाउट्स? इस टॉपिक में आपको डीप डाइव करना है तो आप मेरे से आप कभी पूछ सकते हो। I guess there are no doubts. So let's end the meeting. Thanks for tuning in.